Hello students, in this video we are going to see the practice paper for geography subject HSC board examination. So this is prelims 5th paper which I am displaying on my channel. The first 4 papers I have already uploaded. The answer key for these 4 papers also I have already uploaded. Now this is the 5th prelims paper which I am telling. Okay, so this is the question 1, that is complete the following chain. You can see it carries total 5 marks, and in that we have 3 columns, that is column A, column B and column C. Now if you take a look at the first column, it is formal regions. Now in the case of formal regions, you just have to match which is the matching case in column B, and similarly you have to see what is going to match in column C. So always in this case, here you have total 5 options. Okay, so what is easy and what you know that you should start solving first, and जो difficult है, जो आपको पता नहीं है जिसका आंसर क्या है, तो वो आप बाद में सॉल्व कर सकते हो. बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन छूट ही जाएगा, एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि यस दिस इज द ऑप्शन फॉर दैट वन. ओके, सो लाइक दैट वॉट एवर यू नो, जो भी ऑप्शंस आपको पहले पता है, जिसके बारे में आप श्योर हो, वो मैच पहले करो, और फिर बाद में जो बचा है वॉट एवर इज डिफिकल्ट, so by that you can find out the difficult one. Now here you can see do as direct. अभी do as direct में देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है rearrange the following countries in descending order of population. तो यहाँ पे आपको descending order population के हिसाब से इसको अरेंज करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज अरेंज द एक्टिविटीज फ्रॉम प्राइमरी टू टर्शरी. मतलब क्या, प्राइमरी एक्टिविटी कौन सी है उसको फर्स्ट अरेंज करोगे, फिर बाद में सेकेंडरी, एंड देन उसके बाद टर्शरी. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज इट. नेक्स्ट इज व्हाट, अरेंज द फॉलोइंग सेटलमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन. तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के ऑर्डर में आपको उसे अरेंज करना है कि फर्स्ट किस में पॉपुलेशन कम है, फिर बाद में इंक्रीज होने के बाद किस में आएगा, फिर so in that manner you're going to arrange it. Next is industrial development is less in South America. So यहाँ पे आपको true और false बताना है. अगर आपका statement true है, then you have to give a justification for it कि why your statement is correct. In the same case for the question number 5, you have another question, that is the geographer has to have the knowledge of computer. So even in this case you just have to tell first whether it is true or false, and if it is true then you need to justify ki why this is true. Okay, next is question number C. You have to choose the correct option. तो यहाँ पे 2 correlations आपको दिए हैं, फर्स्ट इज assertion एंड सेकेंड इज रीजनिंग. ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है कि ये दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करने हैं कि वेदर इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. ठीक है, तो उसके बाद आपको और एक चीज़ यहाँ पे चेक करनी है कि R should give an correct explanation to statement A. R should give an correct explanation to statement A, and if it is not giving the correct explanation you have to go with option D. ठीक है, so this is how it comes. So this is ultimately a board pattern paper which is displayed here. इसी तरीके का पेपर आपको एग्जाम में आएगा. ठीक है, so you need to solve it very nicely. Do practice more papers. It will help you to gain good marks in your examination. You will get an idea कि हाँ बोर्ड में पेपर आते कैसे हैं. ठीक है, so this is again the same question, assertion और reasoning. इसमें आपको वही चेक करना है करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स. ठीक है, ये पेपर आप खुद सॉल्व करो पहले, उसके बाद I'll give you the answer key for it. Okay, the answer key for this paper will be uploaded after 2 days. Okay, आज तक मैंने 4 prelims practice papers already upload किए हैं, उनके आंसर्स की भी मैंने अपलोड किए हैं. ठीक है, in the same manner ये आप पहले खुद से ट्राई करो, and then definitely I'll upload the answer key for this. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन D. तो इसमें क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट इनकरेक्ट ग्रुप. तो ऑड मैन आउट जैसे आप आइडेंटिफाई करते हो वैसे ही आपको इसमें से एक ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना है. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस. तो गिव रीजंस में आपको क्वेश्चन है माइग्रेशन हैज क्रिएटेड मेनी इश्यूज इन अर्बन सेंटर्स. द ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट लीड्स टू द चेंज इन लैंड कवर. Third one is Japan is leading in fishing activity. Fourth one is industries are developed on the eastern coast of America. Fifth one is geographical factors which affect the transportation and trade. And one more question regarding give reason is
फैक्टर्स लाइक इलिटरेसी पॉवर्टी अफेक्ट्स द रीजनल डेवलपमेंट। तो ये है आपका और एक क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो इसमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं। फर्स्ट डिस्टिंग्विश बिटवीन है फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन विथ द फिफ्थ स्टेज। सेकेंड डिस्टिंग्विश बिटवीन है पुश फैक्टर्स एंड पुल फैक्टर्स। थर्ड वन इज quaternary and quinary. Fourth one is physical and political, and fifth one is physical geography and political geography, ठीक है। तो ये give reasons, distinguish between are always asked in the board examinations, okay, so you need to be thorough with the points. Now this question is carrying 3 marks, तो at least 5 points तो आपके पास होने ही चाहिए, और 6th point में आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। अगर पुश फैक्टर या पुल फैक्टर है तो कौन सी ऐसी जगह है जो पुश फैक्टर का काम करती है, कौन सी ऐसी जगह है जो पुल फैक्टर का काम करती है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। अगर आप देखोगे फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन या फिर फिफ्थ स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, तो फर्स्ट स्टेज में ऐसी कौन सी कंट्रीज आती है और फिफ्थ स्टेज में विच कंट्रीज आर कमिंग, दैट यू नीड टू राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो दिस इज टोटली ऑन दी मैप, यू जस्ट हैव टू outline this map, okay, these locations on the map. Next question is question number 4b. तो यहाँ पे देखो एक population pyramid के 3 figures दिए हैं, that is A, B and C, ठीक है। So each and every feature of the population pyramid is different, okay. So you have some questions on it, like first to 5. These are the questions on which you are working. So first you need to see the population pyramid, kindly do the study on it, and then you need to answer the questions. Like first question is which graph represent the country having the highest medical expenditures, okay. So likewise आपको ये graph देख के ये question को solve करना है। After that you have question number 5. Here you have to write a short note on. So 5 questions are given, out of that any 3 you have to do, and 1 question carries 4 marks, okay. So here third stage of demographic transition, इसके बारे में आपको लिखना है, या फिर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के बारे में लिखना है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, लाइक आई सेड, एग्रीकल्चर का जो लेसन है लाइक प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हर साल there is a question on the agriculture. Last year they asked about the plantation agriculture, okay, so this year they may ask you about intensive, they may ask you about shifting या फिर मार्केट गार्डनिंग, ओके। तो किसी ना किसी के बारे में तो ये आपको क्वेश्चनिंग करेंगे ही करेंगे, ओके। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू ओनरशिप। तो ओनरशिप कौन हैंडल कर रहा है, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट है या फिर जॉइंट है या फिर कोऑपरेटिव है, यू नीड टू टेल who is the ownership, so which are the industries which are coming in that ownership, means you need to give an example of it, okay. Next is characteristics of quaternary activities. तो quaternary activities के बारे में आपको लिखना है, which type of people are included in it, what type of occupations are included in it, in which countries you see quaternary activities are more, okay. So these are the things which you need to write in this answer, okay. Next is read the following passage. So the passage is given to you and you have 4 questions on it, so you need to read the passage carefully and you have to answer these questions, okay. After that you have next question, that is draw a neat label diagram. Here you have total 3 topics, out of that you have to draw 2 out of 3, okay, 2 marks for each. So these are the diagrams which you need to draw. Proper diagram with proper label will carry total full marks. Next we have, that is question number 7, answer the following in detail. 2 questions are given to you, out of that you have to solve only 1 question, and this last question carries total 8 marks. Now if you see, the first question is regarding demographic transition theory, okay. So if you want to get full marks, I suggest you to draw a diagram for demographic transition theory, okay. It will definitely help you to gain out of marks. Basically ये जो लास्ट क्वेश्चन होता है, इसमें पूरे के पूरे मार्क्स नहीं दिए जाते, लेकिन अगर आप कुछ कॉम्प्लीमेंट्री डायग्राम या फिर मैप या फिर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा, if you do something in your answer, then definitely you will get a benefit of it. Next is write a detailed note on global regions carrying animal husbandry.
तो यहाँ पे आप ग्लोबल रीजन्स यू कैन टेक अ स्टेंसिल ऑफ मैप, ठीक है। तो मैप ड्रॉ करके आप कुछ ऐसे रीजन्स अगर आपने नोट लोकेट किए उस मैप पे जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री इज कैरिड आउट, so definitely the examiner won't get any chance to cut your marks. So this is how you need to write the paper. You need to take the care of small things to get good marks in geography subject. So this is all about prelims 5 paper and the discussion on this paper. I hope this video will help you and it will definitely help you to gain the good marks in examination. Thank you for watching. Do subscribe my channel.